हेलो गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, राइट। आइडेंटिटीज़, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में तो बहुत सारा कुछ आप जानते हैं। कोई भी अननोन नंबर जब इन्वॉल्व करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, एक्स, वाई, ए, बी, के एंड सो ऑन, तो नंबर को जब हम सिंबल से लिखते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, तो हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन शुरू करते हैं, राइट। सो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस में डायरेक्टली बता देता हूँ। मोनोमियल्स आपको याद होगा, मोनोमियल्स हम लिखते हैं, मोनोमियल्स लिखते हैं जैसे कि 2x, 5xy, 7 ABC एंड सो ऑन। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो x, y और ABC लिखे गए हैं, ये अगर मल्टीप्लिकेशन में हैं तो ये एक ही टर्म कंक्लूड करते हैं, दो टर्म नहीं बनते, इसलिए ये मोनोमियल में आएगा। बाइनोमियल्स आपको याद होंगे, बाइनोमियल्स आपको याद हैं। बाइनोमियल्स में हम x के साथ अगर कोई y ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये टू टर्म्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसके साथ हमें ये देखने की ज़रूरत है कि y के साथ अगर हम 3 भी लिख लें, अगर नंबर भी लिख लें, तब भी ये टू टर्म्स रहती हैं। एंड लाइकवाइज अगर हम लिखें 2x + 3, तब भी ये बाइनोमियल रहेगा। तो बाइनोमियल का फॉर्मेट क्या हो गया, x, y, z + 5 भी बाइनोमियल रहेगा, राइट। और कुछ लिख सकते हैं जैसे -2x z -7y, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, बाइनोमियल्स। इसी तरह से ट्राइनोमियल अगला आएगा, ट्राइनोमियल और सो ऑन। आप नीचे क्या लिखेंगे, ट्राइनोमियल्स में लिख देता हूँ x, y, z। नीचे की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे हो गए, तो क्या नाम ले देंगे, पॉलीनोमियल्स। क्या नाम ले लेंगे, पॉलीनोमियल्स। सो पॉलीनोमियल्स माने बहुत सारे, ये सारे के सारे पॉलीनोमियल्स कहला सकते हैं, बोल सकते हैं इनको पॉलीनोमियल्स। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सपोज आपके पास 2x लिखा है, आइडेंटिफाई कर लीजिए, x आपका वेरिएबल रहेगा और 2 आपका कोफिशिएंट रहेगा। x आपका वेरिएबल है और 2 आपका कोफिशिएंट है। एक और चीज़ देखने लायक है, आपको पूछते किस तरह से हैं, x का कोफिशिएंट 2 है, राइट। और अगर आपके पास 2xy हो और y का कोफिशिएंट पूछा हो तो आपको 2x कहना है। कोफिशिएंट ऑफ y पूछा हो इस क्वेश्चन में तो आपको कहना है कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 2x, राइट। 2x क्यों, x तब आपको नज़रअंदाज करना है कि ये वेरिएबल है। आपको सिर्फ वेरिएबल आपको समझना है, आपको y और बाकी जितना भी रिमेनिंग कंटेंट है वो आपको कोफिशिएंट समझना है। तो कोफिशिएंट और वेरिएबल के बारे में इतना था। एक चीज़ और, अगर x + 2 हो तो 2 आपका इंडिपेंडेंट टर्म है और x आपका वेरिएबल पार्ट है और इसका कोफिशिएंट 1 है। अगर आपसे कहें कि x का कोफिशिएंट बताइए तो x का कोफिशिएंट क्या रहेगा, द कोफिशिएंट ऑफ x क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, आपका रहेगा 1। क्या रहेगा, 1, 2 नहीं। कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1, 2 नहीं कहना है, राइट। एक्सरसाइज 9.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखता है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 5xyz² - 3zx। सो टर्म्स पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। टर्म्स क्या क्या हैं, टर्म्स हैं देखिए 5xyz² और दूसरा टर्म कॉमन करके लिखना है -3zx, राइट। 2 टर्म्स
उसके बाद कॉफिशिएंट्स देखते हैं। फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट कैसे आइडेंटिफाई होगा। कॉफिशिएंट आपने लिखना है कॉफिशिएंट ऑफ x y z स्क्वायर इज 5। सिमिलरली आपने लिखना है कॉफिशिएंट ऑफ zx इज -3, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू इट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी है कि जो जितने सारे पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उनमें से कौन से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में फिट नहीं बैठते हैं, वो भी अलग कर देने हैं। सो मोनोमियल्स हमने लिख रखे हैं। मोनोमियल्स में 1000 आएगा, पहले 1000 और उसके बाद PQR। 1000 के बारे में ध्यान दीजिएगा। 1000 के पास कोई वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेशन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ऐसा होता है कि जो नंबर आप लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 5, जब आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का चैप्टर कर रहे हैं तो आपने इसको अकेला कॉफिशिएंट ना कह के आपने कहना है कि ये मोनोमियल है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, राइट। सो अकेला नंबर बिना वेरिएबल के अगर हो तो वो आप कौन सी कैटेगरी में फिट करेंगे, मोनोमियल्स में। तो मोनोमियल्स में 2 हो गए, 1000 हो गया और PQR हो गया। PQR में क्योंकि तीनों नंबर्स, तीनों वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए ये मोनोमियल है। बाइनोमियल्स में कौन कौन आ गए, x प्लस वाई प्लस है, ध्यान दीजिए। द सेकेंड इज 2y माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। एंड थर्ड वन इज 4z माइनस 15z स्क्वायर है। और उसके बाद आएगा p स्क्वायर q इन प्लस p q स्क्वायर, ये भी बाइनोमियल है। एंड फोर्थ वन इज 2p प्लस 2q। सो नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स में विल टेक 3 टर्म्स, 7 plus y plus 5z 5x. So 7 plus y plus 5x is a trinomial. Again we have another trinomial, and the last one is 5x minus 4y plus 3xy. The polynomials that do not fit in these categories are there also. There are 2. The first one is x square plus x cube plus x4, and the second one is AB plus BC plus CD and DA. Now this is clear from the number of terms, counting the number of terms, that we have x plus x square plus x cube plus x4. We have 4 terms here, right? So we cannot put this polynomial into monomial, binomial or trinomial. It has 4. You can say it is a tetranomial, but we do not use many of the names as tetra, penta, hexa. We usually call them as polynomials. So these are 2 polynomials. Those are not fit into the monomials, binomials. Question number 3 says, at the following, we have the first binomial is AB minus BC, second is BC minus CA, and third one is CA minus AB. So how do we do this? See solution. How do we do this? You either write all these 3 into a simple line, AB minus BC, put a plus sign here, plus BC minus CA, and then again put a plus sign, CA minus AB, right? So next step is, if you have AB, then find out another one who is having AB. So this one is having the AB. So this AB is of plus sign and is of minus sign, so these two will cut each other. So AB, what I am doing, AB minus AB is equal to 0. So cancel out those two, AB of plus sign and AB of minus sign. Similarly, BC, we have BC of negative sign. Now find out another BC. You have another BC here. So one is of positive sign and one is of negative sign. Those are to be cancelled out. The third one is also of the same category. So what you have, the answer as 0, right? And trinomial. Another question we have in the same category at the following, part number 2, question number 3. A minus B plus AB comma B minus C plus BC
and C minus A plus AC. So again similarly what we'll do, we'll put all these into a simple line, A plus B minus plus AB plus AB, A plus B plus A minus B plus AB, plus sign B minus C plus BC, again a plus sign C minus A plus AC. So in the next line you can rearrange all those having the same variables. You can say A minus A. So what do we have? A minus A, A minus A. Now taking B, B minus B plus B, we have this one is plus B, and we have C minus sign plus C plus sign, and lastly we have AB, this one, plus BC, BC plus this one is CAAC, AC, AC last one, right? So next is A minus A is gone, B minus B plus B gone, C minus C plus is gone. So the residue we have is AB plus BC plus AC. So this is your final answer. This is called answer, right? Answer. All terms are unlike terms, you can say. All terms are unlike terms. So when we have unlike terms, we cannot do anything for those unlike terms. So this will be your answer. Question number 4, A part. Subtract 4A minus 7AB plus 3B minus 12 from 12A minus 9AB plus 5B minus 3A, right? So this is your question. Let us see how do we do this. We have been said that subtract this polynomial from this one, right? So all we have to do is put this polynomial here as 2A minus 9AB plus 5B minus 3, right? And then put a minus sign and then use a bracket. You can use a single bracket, simple bracket, you can say. Put a bracket here and write here 4A minus 7AB plus 3B plus 12, right? So in the next very next step you have to do is 12A minus 9AB plus 5B minus 3, and then open this bracket as distribute this negative sign to all the terms as minus 4A. Look at it, minus 4A. This is minus sign already, a minus sign another is coming by, and minus into minus is plus, so this is plus 7AB, and again this is plus sign, but this negative sign will change this into 3B, and the last one is minus of 12, right? So plus sign we have and negative sign will change. So in the very next step we will rearrange all these terms as 12A and minus 4A. So 12A and minus 4A, put them together. The next is minus 9B, minus 9, minus 9, minus 9, minus 9 AB, and another one AB, having AB as variable. The term is plus 7AB, right? Then put here as this one plus 5A, 5A, it is not 5A but it is 5B, 5B, and then another term having B as minus 3B, and then independent terms we have minus 3 and minus 12, right? So these two and these two we have. So these two will come together as 8A minus, this is minus 9 and plus 7, so minus 9 plus 7 is minus 2 AB,
and this is my plus 5 and minus 3, so it will reduce to plus 2b, and minus 3 and minus 12 you will be getting this is negative of, what is this? This is negative of 15. So this is your answer. Correct. एक बार और once we will try this question by putting the terms one below the another one. So there is another method of doing this. Let us see how do we do this. Again, we can put the terms as the polynomials are to be written. Firstly, you write 12a minus 9ab and plus 5b minus 3, and below it you write 4a here, 4a minus 7ab, and this one is plus 3b plus 12. So all you have to take care is that put exactly the like terms one below the another, right? So there must be, if you have a variable here, you should put that similar like term below that 12a as 4a, right? So change all the signs of the second line polynomial, change all the signs because we are doing the subtraction. So this sign is basically the plus sign but has been changed into negative sign. This negative sign will be changed into positive sign. This positive sign will be changed into, and the positive sign is minus sign. So now do all these as minus 3 minus 12. So this is gone, this is minus 12 now. So minus 3 minus 12 is minus 15. This is plus 5 and minus 3, you will get plus 2b, and this is minus 9 plus 7, so this is minus 2ab, and the last one is 12a minus 4a, that is 8a. So likewise you can also do this. This is your answer. This is your another question number 4. Subtract this polynomial from the second one. So all you have to do is to put this polynomial here and then put negative sign, and this first polynomial given, put this into the bracket, put negative sign outside it because of the subtract you are supposed to do. Now rearranging all the terms, 5xy minus 2yz has been taken from, so minus 2yz, and this negative sign is put inside the polynomial, and all the signs are changed. Minus 3yz plus we have but has been changed into negative of 5z. Negative sign we have but has been changed because of this negative. This is plus 7xz. So rearranging all the terms and putting like terms together, we will get 5xy minus 2xy minus 3xy minus 2yz minus 5zy yz minus 2xz plus 7xz plus 10xyz. So these two, note down these two, xz and xz and zx are same things, right? Here we have xz or zx. So zx can be written as every xz is actually zx. So a into b is b into a. This is called commutative property. So 5 minus 3 you will get 2xy, minus 2 minus 5 you will get minus 7yz. This is minus 2 plus 7, you will get plus 5xz, and the last term is independent term having no like term, so put this at 10xyz as the last term, and you will have your answer here. Next question is question number 4, part C. We have subtract the first polynomial from the second polynomial. This is a bit larger question
larger number of terms we have in both of the polynomials. So have patience and let us start doing this. Write the first one, uh, this 18 minus 3p and so on. The 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q. Then put negative sign and start a bracket and start writing the first polynomial, which has to be subtracted from this one, as 4p square q minus 3pq plus 5pq square minus 8p plus 7q minus 10, and bracket close. So in the very next term, next line we will in the very next line we will open this bracket and put this negative sign inside. So all the terms has to be rearranged and to be as minus 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q. Then start opening this bracket as negative of 4p square q. Negative sign will go to the positive sign. This is 3pq, and this negative sign 5pq square minus we have, but it has to be changed into plus sign 8p, then minus 7q plus 10 we have. So all you have to do is to arrange all the terms. Have patience and look into the process. 18, then plus 10 we have like terms, plus 10, then this is minus 3p, and find out another term having p only. This one is having p plus 8p, and then start by minus 11q. Find another one for q. This is minus 7q, and then plus 5pq, another one pq is plus 3pq, another one is minus 2pq square, so be careful, pq square we have, so this is minus of 5pq square, then this is plus 5p square q. Find another one p square q. This is minus 4p square q. So need not to worry too much about rearranging all these. Put all these in a very, you can say all these terms are having a good pattern. Start with the first one, find another one. If you have another one, then write all three all together, and this is the process by which do we put all these terms together. So all these terms are having the same variables, so these are the like terms. 18 plus 10, this is 28. So these two are having, one is negative sign and another is positive, so 8 plus and minus 3 will give you plus 5p, right? So minus 11 minus 17 is minus of 18q, plus 5 and plus 3 will give you plus 8pq, minus 2 and minus 5 will give you minus of 7pq square, and last one is minus 5 plus 5 and minus 4 will give you plus 1, you can say plus 1, so this is p square q. 1 is understood, there is 1, right? So you can write it, or you can
you can write here as 1, or even if you are not writing it 1, so once you are writing p, it is understood that it is 1p. So even if 1 is not here, you can understand that this p is basically 1p. So similarly, there is no need of writing 1. Your answer is p square q. So this is your final answer.